हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत ही बारीकी से देखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने वी लुकअप पे तो बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है, लेकिन एच लुकअप पे उनको कुछ थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे मेरे पास में कुछ मैसेजेस भी आए कि यार ये वी लुकअप तो ठीक है, एच लुकअप की कोई यूज़ नहीं है। ऑनेस्टली माय डियर फ्रेंड्स, एच लुकअप का यूसेज हमें क्या होता है और किस टाइप से होता है वो हम देख सकते हैं। देखिए आप लोग की सुविधा के लिए, जैसा कि एक टेबल है, सी वी मीन्स वर्टिकल, वर्टिकल एंड एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो बस यही है वी लुकअप एंड एच लुकअप। अगर आप देखो, एक हमने एक सिंपली टेबल बना रखा है, ये वर्टिकली है, इसमें सिर्फ दो कॉलम है, बाकी सभी रो हैं। और सेम यही प्रोडक्ट 120, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। सी दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। अब देखिए एक बड़े मज़े की चीज़ बताऊंगा जिसमें आप लोग को बहुत ही कम समय में वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि अगर जैसे वी लुकअप करके देखें कि यार इसमें वी लुकअप का क्या यूज़ है। अगर सपोज इस डेटा से मुझे प्रोडक्ट 3 या प्रोडक्ट 2 या प्रोडक्ट 1 के बारे में निकालना हो, तो देखिए हम सिंपली क्या करते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, दैट लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू इज प्रोडक्ट 3। दिस इज द वैल्यू एट विच वी आर लुकिंग टू फाइंड द रिजल्ट, कॉमा टेबल array. As I have explained all of you that array is nothing but the table, so don't get confused with this. I have selected the entire table, that is B7 to C11. See, this is B7 and this is C11. Easy. Comma, column index number. See, there are two columns only. See, there is one more thing, one more query that I have got, that why I always give the demo on the smaller data, because my dear friends, it is easy to understand the formula, not to confuse you with the larger set of data. So understand the formula on the smaller data and deliver it on the larger data set. Okay, now column index number, that is 2 only, correct? Comma, what you want, false, exact match, and approximate match is true. We all know 0 is for the false match. Bracket close, enter. See, this is 15 result that I have got. Suppose if we have an option of this kind of data, we have the same data in a horizontal format. So can we do this with a VLOOKUP? Let's try for this. VLOOKUP, lookup value will be this, comma, table array, okay, this will be this, again comma, column index number, what you want to say. Since we have taken horizontal, so it should come 3, comma, see, wait, 3 comma 0, again it is coming not available because it has counted vertically. Now what will happen if here, see, for your convenience I have already written HLOOKUP formula, and now let's find the same query with the HLOOKUP. While applying HLOOKUP to fetch the value from this array set, so HLOOKUP, sorry, is equal to HLOOKUP, okay, bracket open, lookup value is product 3. See, the same, I am applying what I have used for the VLOOKUP, comma, table array. This is the table array, my dear friend, comma. Now it is asking the row index number. See, in the previous case it was asking for the column index number. Now the row is only 2. See, this is the row 1, this is the row 2, whereas this is the column 1, this is the column 2. Got it? Oh sorry, I am deleting this. So row index number, there are only 2, comma, what we want, true or false. So we can get the exact value. For that we can put 0, bracket close, and put enter. See, while using horizontal lookup, we have got the value here. For your convenience, say for the same product, let's find it out quickly, is equal to
H lookup. Okay, lookup value is product number 3, comma, it is asking for the table array, select this, comma, row index number 2, comma, so say for example false match, do it, see that, this we have got. So the same data format, if we have horizontally, so we will be using H lookup, and we have got it if vertically, so we will be using VLOOKUP. Say for example, if we need it for the product number 1, just paste this. See, this is very dynamic formula, it will keep on changing. Say for product number 1, I have applied here, and the value got changed from 15 to 20. So this is the same table. So I hope you all have enjoyed this. So request to all, if you want to see my video continuously, so kindly subscribe and press the bell icon at least. I'll not request for the like and share, as per your own convenience I'll leave on to it. हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू सपोर्ट दिस. आई प्रॉमिस दैट विल गिव यू द क्वालिटेटिव वीडियो ऑन दिस चैनल ओनली. थैंक यू सो मच.